Very good morning, students. Welcome to Gyanmajari Vidyapith Mahuva online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. Today we are discussed about the cells and reproduction, which are the biology unit number 2 on your supplementary book. So first of all, we are start the solving some practice question regarding the previous lecture. So let's start it. Question number 2.1 in your supplementary book, page number 3. Question is that in figure number 6, you can see the figure number 6 in your supplementary book. Label the three main parts common on all cells and they describe their structure and the function. हमको तीन जो कॉमन पार्ट्स है उसको हमको यहाँ पे लेबल करना है और उसके ऊपर हमको कुछ लिखना है यानी कि डिस्क्राइब करना है their structure and function. First, I label that like this. It is a nucleus, so I can mention the nucleus. Then cytoplasm and the cell membranes is a outer layer of the cell. First, we are described the first is a cell membranes. Structure कैसा होता है? It is a porous outer covering of the cell. So what is the function? It separates the one cell from the another cell and it is allows to movement and exchange of the material to the form of the cell. Next one is a cytoplasm. Cytoplasm का structure क्या होता है? It is a jelly-like structure, substance inside the cell. Next one, function. First, cytoplasm gives a shape and the structure to the cell. And the next one, it contains the smaller parts of the cell called organelles. तो आपको इस तरह से ही लिखना है. Okay? Next. Third one is a nucleus. It is a structure, a spherical structure surrounded by the cytoplasm. It stores the genes and is responsible for the transparent of characteristic of the parent of the offspring. It controls the cell activities such as a growth and the reproduction. Now let's watch one video regarding the topic and understood that what they are actually said. The structure and functions of the nucleus. What is common among the organisms shown on the screen? They are all made up of cells. They could be made up of a single cell or millions of cells. Most cells have a few features in common. They have a cell membrane, which is a flexible wall with pores. The membrane separates one cell from another. It gives the cell its shape and controls the movement of materials in and out of the cell. For example, it allows nutrients to pass in and waste materials to pass out. In addition to the cell membrane, plant cells also have a cell wall which surrounds the cell membrane. The cell is filled with a jelly-like substance called the cytoplasm. Different parts of the cell, called organelles, float in the cytoplasm. The largest organelle is the nucleus. It is the control center of the cell. If we compare the human body to a cell, the nucleus will be the brain. Just like the brain tells different body parts what to do, the nucleus tells the different organelles of the cell what to do and how to do it. Just like the cell, the nucleus is also surrounded by a nuclear membrane. This is a double membrane with pores called nuclear pores. These pores control what enters and exits the nucleus. The nuclear membrane separates the nucleus from the cytoplasm. The nucleus also has a ball-like structure called the nucleolus, which plays a role in making proteins and transporting them. The nucleus also has thread-like structures known as chromosomes. Chromosomes carry genes.
Genes are the units that carry information about the characteristics that are passed on from the parent cells to the cells of the offspring. This is known as genetic or heredity information. Chromosomes are considered to be the genetic material of the cell. When you see a newborn baby, you are able to notice a few things about the baby's appearance that it has in common with its mother, and a few others that are in common with its father. This is because the baby gets its genes from its parents. So, we learnt about the cell and the nucleus present in the cell. These types of cells are known as eukaryotic cells. Eu means new and karyon means nucleus. Animals, plants and fungi all have eukaryotic cells. That is, cells that have a well-defined nucleus with the genetic material inside it. Organisms such as bacteria and blue green algae are made up of cells that are much smaller than eukaryotic cells. These cells have genetic material that just floats in their cytoplasm. It is not inside a nucleus or enclosed by a nuclear membrane. Their cells are known as prokaryotic cells. Pro means primitive or old, and karyon means nucleus. Let us summarize. So today, we learnt about the nucleus. It is the largest organelle of the cell and has different parts: the nuclear membrane, nuclear pores, the nucleolus, and chromosomes. We also learned that cells with a well-defined nucleus are called eukaryotic cells. Organisms that have eukaryotic cells are called eukaryotes. Cells in which the genetic material floats in the cytoplasm are called prokaryotic cells. Organisms that have prokaryotic cells are called prokaryotes. Through this video, we are understood the how, what is the nucleus, what is the function, what is the what is the function, and what is the प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्लॉट फॉर्म के अंदर होता है, तो वो दोनों को एक को हम वेल डिफाइंड यानी कि उसके अंदर हम देख सकते हैं, सो उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक्स, और जो इसके अंदर फ्लॉट्स होता है, फ्लॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक्स न्यूक्लियस. So now solve the next practice question number 3.1 on your supplementary book, page number 4, SB4. Question is that why is the nucleus referred as the brain of the cell? Because the nucleus referred to the as a brain of the cell because it is the control and the center of the activities of all cell and coordinates the functions like the growth and reproduction. So that's why we are referred as our brain. Now the next is a practice question number 3.2 on same page as before. Question is that in figure number 10 and 11, identify which cell is eukaryotic and which one is a prokaryotic. Give your reason for answer. So here figure number 10 is called a prokaryotic cell because उसके अंदर cell किस तरह से nucleus हमको well defined नहीं है. So we can say that it is a prokaryotic, and जिसके अंदर nucleus well defined है तो it is a eukaryotic cell. Next, nucleus is well not defined, that's why figure number 10 is a prokaryotic. So the prokaryotic cell does not have well-defined nucleus or nucleus membranes are called a prokaryotic cell, and the genetic material is freely floating in the cytoplasm, so that's why it is also prokaryotic cell. And in figure number 11, well-defined nucleus with the nucleus membranes. So first is a eukaryotic cell has a well-defined nucleus and the nuclear membranes. Then the genetic material is enclosed with the nucleus. So we can see that the genetic material उसके अंदर enclosed है with the nucleus.
सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ तक रखेंगे। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। प्लांट सेल एनिमल सेल्स किस तरह से होते हैं, उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देयर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट इज द और सेल्स ऑर्गेनेल्स। सो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने अभी देखना है। तो अभी तक हमने जितना देखा है, आपको उसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। देन आफ्टर आज के वीडियो के अंदर जो भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ फिगर्स आपको आपकी फेयरबुक के अंदर ड्रॉ करके लिखने हैं। देन आफ्टर प्रॉपर हैंड राइटिंग होनी चाहिए और आपको उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करके मुझे सबमिट करने हैं एज अ होमवर्क। ओके, सो आज हमने क्या क्या कौन से पेज देखे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी। First, we are see the in page number SB3, page number 29. You can see this type of page in your supplementary book. First of all, we are solving the practice question number 2.1 and the give the particular description with the proper uh, structure. Then after we are discussed about the nucleus. What is the nucleus? It is a The nucleus is a composed of the many parts which perform the different functions. Then उसके अंदर हमने उसके अलग अलग टाइप्स देखे। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस पोर, क्रोमोसोम्स एंड द न्यूक्लियोलस। ओके, सो सारी चीज़ देखिए। उसके अंदर उसके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, वो क्या कैरी करते हैं, क्या नहीं करते, सारी चीज़ हमने ये कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 3 के अंदर हमने देखी है। देन आफ्टर we also learned about the page number SB4, page number 30, eukaryotic and prokaryotic cells. Cells can be categorized into two types, eukaryotics and prokaryotics, depends on the presence of the well defined nucleus. जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा उसके अंदर हमको उसको वेल डिफाइन करना है। अगर वेल डिफाइंड है सो वी कैन से दैट इट इज अ यूकैरियोटिक, अगर वेल डिफाइंड नहीं है सो वी कैन से दैट इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो यहाँ पे न्यूक्लियस के डिपेंडेंट यहाँ पे उसके दो टाइप्स यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज कर पाते हैं। सो आपको इस तरह से उसका डिफ्रेंशिएशन भी लिखना होगा। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको आएगा वो राइट द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, हर साल एग्जाम के अंदर होता है। So you can write like these points and these figures. Okay, then after we are solving the practice question number 3.1 and 3.2. उसके अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियस क्यों हम ब्रेन के साथ क्यों रिफर्ड करते हैं, और देन आफ्टर यहाँ पे दो फिगर नंबर 10 और 11 है, उसके अंदर कौन सा प्रोकैरियोटिक कौन सा यूकैरियोटिक है वो हमको आइडेंटिफाई करके उसका रीजन हमको लिखना था। देन आफ्टर कॉन्सेप्ट टाइम, ये जो है उसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट टाइम आएगा उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत रीडिंग करना होगा उसके अबाउट प्लांट सेल। ओके, प्लांट क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या क्या सेल्स ऑर्गेनिल्स होते हैं, उसके अंदर प्लांट सेल वॉल यहाँ पे होता है, बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, वो हमको मालूम है। तो वो पर्टिकुलर हम सेल के बारे में थोड़ा डीपली सीखने वाले हैं इन अपकमिंग लेक्चर्स। सो अभी हम आज यहाँ तक रखेंगे। आप होप या आप आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट्स नहीं है। फिर भी यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो अभी के लिए हम यहाँ तक रखेंगे। सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस।